talking about. I'm giving this point because this point comes as a standard MCQs in entrance exam. So transition not only involves an increase in dimension aspect, but also deepening of inferior concavity accommodating a greatly enlarged and heightened connective tissue papilla. Why? Because rate of proliferation of connective tissue papilla is higher. At the latter stage, stimulate morphology of presumptive pulp. So dental papilla, as I said, it converts into the pulp. So in the bell stage of development, 4 layers are established. One is inner enamel epithelium, which you are aware of. Second is outer enamel epithelium, again you are aware of. And third one is stellate reticulum, but fourth layer which comes here, that is a stratum intermedium. The stratum intermedium is located between inner enamel epithelium and stellate reticulum के बीच में ये located होता है. So one by one, let me give some elaborated idea about inner enamel epithelium, outer enamel epithelium, stratum intermedium, and stellate reticulum. So when it comes to outer enamel epithelium, it is layer of cells covering the external surface of the bell septal structure from the crest to the base. At the base, outer enamel epithelium is also known as cervical loop. Later in apposition stage, as the cervical enamel and dentin for the neck of tooth are developed, the cervical loop is transformed into a bilamellar structure called Hartwig epithelial root sheath, which is responsible for determining the size, shape, number, and certain features of the roots. Means outer surface पे जो enamel epithelium है, that is outer enamel epithelium, crest of bell से नीचे जब आती है तो cervical loop बन जाती है. The cells of outer enamel epithelium in cervical loop are low columnar, becoming cuboidal along the slope and continuing as uninterrupted layer and become flattened at the crest. So, at the cervical loop region, the outer enamel epithelium is low columnar, and as it moves towards crest of the bell, it becomes compressed and it becomes flattened. Electron microscopically, the dental sac, connective tissue at the cervical loop is separated from outer enamel epithelium by basal lamina. Basal lamina is also known as basement membrane. The width of basal lamina is 100 nanometer, which is of uniform thickness. The cells of cervical loop differ from that of crest of slope and crest of other morphological aspects. The loop cells show pinocytic vesicles with small intercellular spaces and desmosins. The nucleus is polarized and the Golgi complexes are located lateral to the nucleus with abundant endoplasmic reticulum. So, these are the appearance of outer enamel epithelium. The maturation of outer enamel epithelium progresses crestwards, marked by reduction in height but increase in number and size. So organelles are also reduced, indicating decreased metabolic needs of the cells. That means from the cervical loop, there is division of the cells. And as they move toward the crest, they become mature. So the synthetic component and synthesis secretion is from crest portion, and division is at the lower end of enamel organ or at the region of cervical loop. When it comes to inner enamel epithelium, the inner enamel epithelium, these cells are known as pre-ameloblast as they become enamel synthesizing in future, and the enamel synthesizing cells are known as ameloblast.
They form a single layer lining epithelial organ and are continuous with outer enamel epithelium and cervical loop. The inner enamel epithelium are initially low column, but as the maturation occurs, they become taller. The least differentiated cells are located in the cervical loop. As I said earlier, cervical loop is the place or site where cell division occurs and differentiation and maturation occurs towards the crest. ठीक है, और जहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा वहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं होगा, वो सिंथेटिक सेल्स होंगे. So as a pre-ameloblast converts into ameloblast, it becomes columnar. Whereas when outer enamel epithelium becomes mature, it becomes flattened. So outer enamel epithelium is flattened at crest, whereas inner enamel epithelium is elongated at the crest. At this site, the cells of inner enamel epithelium are differentiated into tall columnar, approximately 80 micron in height and 4 micron in width. Differentiation occurs initially at middle area, approximating the crest of dental papilla, and spreads over the slope towards the rim of the bell. The nucleus of cells of inner enamel epithelium becomes polarized. The crest cells, those of incisal edge or tip of cusp, are first differentiated and mature to deposit enamel. Hence, the incisal area possesses longer enamel formation, whereas the cells of cervix or base of cusp have shorter period of amelogenesis, which accounts for greater enamel thickness in incisal edges and cusp edges. Means wherever the site, last layer, so wherever there is future site of incisal edge formation or cusp tip formation, there enamel epithelium differentiates first, there amelogenesis initiates first. So जहाँ पे cuspal tip होगा वहाँ पे amelogenesis पहले चालू होगा, and at the base of cusp or at the base cervical region of tooth, there is lesser duration of formation of enamel or amelogenesis. So thickness of enamel on cuspal tip is more, and thickness of enamel on cervical line is less, because differentiation of pre-ameloblast into ameloblast occurs late at the cervical region and it occurs early on the future cuspal tips. The distal surface of inner enamel epithelium rests on basal lamina, which is continuation of outer enamel epithelium and cervical loop. Aperiodic fibrils are associated with basal lamina, which goes from connective tissue of dental papilla to basal lamina, approaching the cell surface at oblique angle. This is aperiodic fibrils जो basal lamina के साथ associated होते हैं. Inner enamel epithelium rests on a well-defined basement membrane with elaboration of dentin by odontoblast and enamel by ameloblast. Dentino-enamel junction is established. Electron microscopy studies reveal that cells of inner enamel epithelium are joined by desmosomes and hemidesmosomes. Tight junctions seal the intercellular spaces of pre-ameloblast at the junctions with connective tissue of dental papilla. The lengthening of pre-ameloblast and nuclear polarizations are sign of maturity of cells of inner enamel epithelium. Means as the length increases and
as the nucleus becomes polarized. I will explain the polarization following this slide. The next layer is the stratum intermedium. It consists of 2 to 3 cell layers with hyperchromatic nucleus. Cells are oval to flat, oriented at right angles to developing ameloblast. Electron microscopically, these cells appear round to flat. The cytoplasm of stratum intermedium is moderately electron dense, where nuclei are centrally located with presence of Golgi complexes, endoplasmic reticulum, and mitochondria. It also consists of various enzymes like succinate dehydrogenase, thiamine phosphate, adenosine triphosphate, and nucleotidase. Now, at onset, stratum intermedium is a unique cell layer seen in enamel organ, and this is the layer which is responsible for formation of enamel. This is the layer which is responsible for high mineral content of enamel. The stratum intermedium is the layer which provides ATPs, which provides energy by which the calcium ions are injected into mineralizing front of enamel. They are injected into mineralizing front of enamel, so the against concentration gradient means प्लाज्मा में जहाँ पे कैल्शियम कंटेंट लो है और जहाँ इनामेल में कंसंट्रेशन हाई है, वहाँ पे ही कैल्शियम को पंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो स्ट्रैटम इंटरमीडियम से मिलता है. So presence of stratum intermedium is mandatory for formation of healthy enamel. In absence of stratum intermedium, enamel नहीं बनेगी या normal enamel नहीं बनेगा. The next layer seen is stellate reticulum. Early in development of stellate reticulum, the cells are more squamoid in the cap state or god state, with short blunt processes and smaller intercellular spaces. Desmosomes connect adjacent cell process. The cells of enamel organ core are further separated by an accumulation of mucoid material in cell spaces, that is glycosaminoglycans. This occurs initially in the center of the core and spreads radially, pushing the cells farther apart to end that the intercellular spaces differ in size and contour, and which leads to formation of stellate reticulum or star-shaped cells. Cells immediately bordering the outer epithelium, enamel epithelium, and stratum intermedium tend to retain their stellate shape, whereas those more centrally located form fusiform or spindle-shaped cells. Contacts among the processes of adjacent cells are maintained by desmosomes. The cells of stellate reticulum differ morphologically relative to their position in this layer. Changes in shape are correlated with the lengthening of cell process and enlargement of the spaces between the cells. The quantity of organelles is greatest in earlier period of bell stage and diminishes with maturation of this layer. Means earlier stages of development of youth, the nutrition is provided by stellate reticulum. As the formation of enamel is completed, the connection from papillae is detached and enamel organ के stellate reticulum degenerate करती है and infolding of outer enamel epithelium होता है, जहाँ से capillaries of dental follicle invaginate inside, and further course of nutrition of forming enamel is derived through blood vessels of dental follicle. So initially जब enamel formed नहीं होता है तो dental papilla से भी nutrition मिलता है और ameloblast को
न्यूट्रिशन जो है स्टिलेट रेटिकुलम से मिलता है. बट वंस इनामेल मैट्रिक्स इज लेड डाउन, नीचे के पैपिला से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और ऊपर की स्टिलेट रेटिकुलम डिजनरेट कर जाती है और इस वजह से आउटर और इनर इनामेल एपिथेलियम एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आने की वजह से जो वैस्कुलेचर ऑफ डेंटल फॉलिकल है उससे न्यूट्रिशन डिफ्यूज करके अमिलोब्लास्ट को मिलती है. सो लेटर स्टेज पे न्यूट्रिशन ऑफ अमिलोब्लास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम वैस्कुलेचर ऑफ डेंटल फॉलिकल. एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है डेंटल फॉलिकल तो सीमेंटम बनाती है, तो इनामेल में इसका रोल क्या है, तो लोग बोलते हैं कोई रोल नहीं है, लेकिन इनफोल्डिंग होती है तो ये रोल आ जाती है. नाउ स्कीमेटिक डायग्राम में अब फिर से रिकैप्चुलेट कर लीजिए. outer enamel epithelium you can see, stellate reticulum you can appreciate, odontoblast जो है ये डेंटल पपाइला है, इसके पेरीफेरी पे जो सेल्स है ये ओडोंटोब्लास्ट है, इनके पेरीफेरी पे जो सेल्स होंगे वो अमिलोब्लास्ट होंगे. जैसे जैसे अमिलोब्लास्ट डिफरेंशिएट करेगी वो लॉन्गर, तो कस्पल टिप जहां पे बनेगी, कस्पल टिप जहां बनेगी वहां पे देखिए सेल्स लंबे हो जा रहे हैं और जहां पे नीचे के तरफ में सेल्स फ्लैटेड है, जो बोला था ना कि इनर इनामेल एपिथेलियम जो होंगे नीचे के तरफ क्यूबोडियल होंगे और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ये कॉलमनर बढ़ता जाएगा. ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट दिस इन स्कीमेटिक डायग्राम. ठीक है, डेंटल पपाइला जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, फाइब्रोब्लास्ट, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं. अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स से ओडोंटोब्लास्ट बन सकते हैं, डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स, इससे बोन फॉर्मिंग सेल्स बन सकते हैं, इससे फाइब्रोब्लास्ट बन सकते हैं. सो अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेंटल पैपिला. और जब तक इनामेल और डेंटिन ले डाउन नहीं होता है it is called as dental papilla, but moment the first layer of dentin is formed, it is called as dental pulp. तो dental papilla pulp में कब convert होती है, जब first layer of dentin is laid down. मतलब पहले क्या lay down होता है, dentin, उसके बाद enamel lay down होता है. Schematic diagram में और आप समझ लीजिए ये रिकैपिचुलेशन है इनामेल ऑर्गन. You can see stellate reticulum, you can see outer enamel epithelium, inner enamel epithelium, dental papilla. ठीक है, and this spindle separate cells जो हैं, this spindle separate cells are stratum intermedium. मैग्नीफाई करके फर्दर हम आपको दिखा दें. Stellate reticulum, stratum intermedium, ठीक है, स्पिंडल सेपरेट डार्क सेल्स जो देख रहे हैं stratum intermedium, these are pre-ameloblast, and you can appreciate outer cells of dental papilla which in future they will convert into odontoblast. That was a schematic diagram, and now you have the actual diagram. That is, this is what you see in the slide. So central area is the stellate reticulum, this is outer enamel epithelium, this is inner enamel epithelium, and out here outer and inner epithelium will merge together, and दोनों जब merge कर जाएंगे और बीच का stellate reticulum और stratum intermedium degenerate कर जाएगा toward the cervix of crown, this will be called as cervical loop, और दोनों layer merge करके नीचे की तरफ extend करेंगे, that will be known as Hartwig root sheath, HERS, Hartwig root sheath. So crown portion के नीचे से cervical loop से extension of outer and inner enamel epithelium will be called as cervical loop. से नीचे से extend करेंगे जिससे बोला जाएगा Hartwig root sheath, and Hartwig root sheath से क्या बनता है, root. Root क्या है, root portion of the tooth which is not covered by crown. So दोनों outer और inner
इनामेल एपिथेलियम जहाँ पे मर्ज कर जाते हैं वहां से इनामेल की फॉर्मेशन नहीं होती है. तो मैसेज इज प्रेजेंस ऑफ स्टेलेट रेटिकुलम and stratum intermedium is mandatory for formation of enamel by enamel organ. क्लास ले रहे हैं, निकाल लेना, चाबी से देख लो वहां होगा तो वहां देख. Next comes maturation of dental papilla. The substance of dental papilla early in morphodifferentiation stage of tooth organ exhibits moderate cell density with developing blood vessels. Since cells of dental papilla are mostly mesenchymal, they are pleomorphic, means multiple shapes होते हैं. The process of adjacent cells of papilla may be joined by desmosomal connections. As the development proceeds, the ground substance of intercellular subspaces is joined by fibril precursors produced by cells and organized in spaces. तो cells, formative cells of pulp क्या होते हैं? Fibroblast. Fibroblast जो होते हैं, they not merely form fibers, they also राउंड में देख लेना अगर कुछ हो तो. They also form ground substances. They also form ground substances. They also form elastic fibers. So all the structure what you see in the pulp, the primary synthetic cells are fibroblasts. Mucoid material हो, glycosaminoglycans हो, fibers हो, elastic fibers हो, सारा कुछ फाइब्रोब्लास्ट से ही बनता है. However, UDM जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड उतना ही देखो, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं, they are reserve cells, totipotent cells और pluripotent cells. These cells can differentiate into either dentin forming cells जिसको ओडोंटोब्लास्ट बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स बनाएंगे, और any problem विशाखा? No, sir. Okay, thank you. As the development proceeds, the ground substances are formed. So सबका formation जो है वो fibroblast से ही होता है. So collagenous element of pulp core are similar to that seen in dentino-enamel junction, like oxytalin fibers, which are elastic, exist in deeper margin of the pulp and measure about 15 nanometer in diameter. The absence of these fibers shows that these pre-elastic fibers are converted to elastic elements, becoming incorporated in pulp arterioles. जो elastic fibers है और arterioles के wall में incorporate होते हैं, जिसकी वजह से capillaries dilate and constrict होती है. With initiation of dentin formation, the vascular supply of dental papilla is increased greatly. So ओडोंटोब्लास्ट को तो न्यूट्रिशन मिलती है, लेकिन डेंटिन का एक लेयर बन गया और इनामेल का एक लेयर बन गया, तो अमिलोब्लास्ट को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है. तो उनकी न्यूट्रिशन जो है इनिशियली स्टेलेट रेटिकुलम से मीट आउट होती है, और जब स्टेलेट रेटिकुलम एग्जॉस्ट हो जाता है तो देयर आर इनफोल्डिंग इन आउटर इनामेल एपिथेलियम, और उन इनफोल्डिंग में फॉलिकल ग्रोस इनसाइड और उसके ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन डिफ्यूज करके अमिलोब्लास्ट को मिलती है. Next comes apposition and maturation. The final stage of odontogenesis include apposition, during which enamel, dentin, and cementum are secreted in successive layers. These tissues are initially secreted as matrix, which is an extracellular substance that is calcified. So initial matrix formation, following that mineralization. The other final stage is maturation, which is reached when dental tissues are fully mineralized. So matrix formation, mineralization, and
मैचुरेशन, क्या फर्क है? तो एक मैट्रिक्स कोलाजन की ले डाउन हो गई, उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो गए, हाइड्रोक्सीएपेटाइड्स, तो उससे मिनरलाइज्ड हो गया, और ये जब मैच्योर करके इसके क्रिस्टल ऑर्गेनाइज हो गए, प्रॉपर साइज के हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एज मैचुरेशन ऑफ मिनरलाइजेशन। तो डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो मैंने इस रीजन को मैग्नीफाई किया है, तो यू कैन सी अमिलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। अमिलोब्लास्ट से एनामेल बना, ओडोंटोब्लास्ट से डेंटिन बनी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा उसको बोला जाता है डेंटिनो इनामेल जंक्शन, डेंटिनो इनामेल जंक्शन, ठीक है। नीचे की तरफ जब देखो कि सिक्रीशन हो रही है, तो इनामेल के जो न्यूक्लियस है, इधर एनामेल बन रही है, अमिलोब्लास्ट के न्यूक्लियस ऊपर के तरफ चले गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। जो अमिलोजेनेसिस जब होती है तो शुरुआत में जो सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन जैसे ही सिक्रीशन स्टार्ट होगा न्यूक्लियस ऊपर के तरफ में चले जाएंगे, जो नेक्स्ट डायग्राम में और अच्छे से आप समझ पाओगे। ओके, तो इसको आप ढंग से देखिए। You can see stellate reticulum, star shaped, you can see the projections, और एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं by desmosomal junction, और बीच के जगह पे glycosaminoglycan से mucoid material attached है। This flattened cells perpendicular to ameloblast are stratum intermedium, ये stellate reticulum हो गई, ठीक है। नीचे का जो ये सेल्स है इनर इनामेल एपिथेलियम है। अभी देखिए इसके न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड है, बीच में प्लेस्ड है। नीचे की तरफ जो है ये डेंटल पपाइला के सेल्स है, इसके सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं क्योंकि सिग्नल इनर इनामेल एपिथेलियम से आई और इनको डिफरेंशिएट कर रही है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये इधर में एग्रीगेट हो रहे हैं। मीनवाइल आप देखिए इस सेल के तुलना में, इस सेल के तुलना में ये बड़े हो गए, तो लेंथ इज इंक्रीजिंग, लेंथ इज इंक्रीजिंग। इनर इनामेल एपिथेलियम आर शॉर्ट कॉलमनर, प्री अमिलोब्लास्ट आर लॉन्ग कॉलमनर। नीचे आप देखिए सेल्स पहले दूर थे, फिर ये जो डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लीनियरली अरेंज हो रहे हैं। So inner enamel epithelium is differentiating. Inner enamel epithelium is differentiating into preameloblast, and undifferentiated mesenchymal cells are differentiating into odontoblast. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में न्यूक्लियस जो है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चालू हो गई। ये स्टार्टअप इंटरमीडियम है, ये नीचे ओडोंटोब्लास्ट जो है आउटर सेल्स ऑफ डेंटल पर ऑर्गेनाइज्ड होने लगे। बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है। जैसे ही डिपोजिशन शुरुआत होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, एंड देयर विल बी first there will be laying down of pre-dentin. You can see there is yellow color, pre-dentin is laid down. जैसे ही pre-dentin lay down हो रही है, देखो यहाँ पे भी secretory end है, न्यूक्लियस उल्टे साइड में चला जा रहा है। इधर में अमिलोब्लास्ट का भी देखो न्यूक्लियस ऊपर की तरफ जा रहा है। So what is synthesized or secreted first? Dentin or enamel? Odontoblast डेंटिन बनाती है। So pre-dentin बनाए और ये मिनरलाइज होगा, फिर यहाँ से सिग्नल जाएगा प्री अमिलोब्लास्ट में, which will convert into ameloblast and form enamel. तो पहले मिनरलाइजेशन ऑफ डेंटिन को समझ लो। मिनरलाइजेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म डेंटिन is always ought to occur one of the two ways. The smaller mineral crystal appear in extracellular vesicles, matrix vesicles. Mineralization is spread from this side throughout the first formed pre-dentin. The smaller mineral crystals are nucleated in space that exists
within collagen fibers. So dentinogenesis takes place in two stages. First is formation of organic collagen matrix. The second is deposition of calcium phosphate crystals. After the initial calcification, all the crystals are associated within or on surface of collagen fibrils. The average crystal attains a size of 3 nanometer in width and 100 nanometer in length. I'm talking about crystal which is hydroxyapatite, calcium phosphate with hydroxyl ion. तो इस क्रिस्टल की साइज 3 नैनोमीटर into 100 नैनोमीटर होता है. As each daily increment of free dentin form along the pulpal boundary, more peripheral free dentin which is formed during the previous demineralize and become dentin. मतलब इंक्रीमेंट्स में डेंटिन बनती है, इंक्रीमेंट में इनामेल बनता है. ठीक है. तो जैसे ट्री इंक्रीमेंट जो बनते हैं तो एनुअल रिंग ट्री में मिलते हैं ना, ग्रोथ रिंग्स ट्री के बांध में मिलते हैं. जब क्रॉस कट करते हैं एनुअल रिंग्स, जिससे ट्री के साइज को पता चलता है. बॉटनी में पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th में. जब ट्री को काटते हो तो ट्री के ट्रंक में क्रॉस राउंड मिलते हैं ना. दिस आर नोन एज इंक्रीमेंटल लाइन्स, इंक्रीमेंटल लाइन और ग्रोथ रिंग्स. So similarly, enamel और डेंटिन में भी इंक्रीमेंटल लाइन या ग्रोथ लाइन मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कितने दिनों से इनामेल की डिपोजिशन हो रही है या डेंटिन कितना डिपोजिट हुआ है. तो इसका यूजेस क्या होता है फोरेंसिक डेंटिस्ट्री में? इनामेल को देख के या डेंटिन को देख के ये बताया जा सकता है कि एज एग्जैक्टली कितना हुआ है डेंटिन और इनामेल की ग्राउंड सेक्शन देख के. हाउ? बिकॉज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनामेल एंड डेंटिन इज नोन. उनकी थिकनेस और उनका लाइन इंक्रीमेंट लाइन देख के एक्यूरेट फीटल एज, एक्यूरेट बेबी का एज बताया जा सकता है. बट दिस इज ओनली पॉसिबल टिल द क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ इज फॉर्म. वंस द रूट इज फॉर्म, फिर सीमेंटल डिपोजिशन के बेसिस पे हम एज कैलकुलेशन करते हैं. So these are dental means of calculation of age. जब forensic dentistry बताएंगे तो उसमें इसको elaborate करेंगे. तो जैसे हमने बोला इंक्रीमेंट जो बनती है, तो सबसे पहले क्या है? इनिशियल डेंटिन डिपोजिशन. फ्यूचर कस्प टिप जहाँ पे बनेगा, प्री डेंटिन बनी. प्री डेंटिन जहाँ पे बनी वहीं पे आपके प्री अमिलोब्लास्ट में कन्वर्ट हुए और इनामेल की इंक्रीमेंट पड़ गई एक लेयर. तो इधर प्री डेंटिन फिर इनामेल का हुआ और जैसे जैसे लेयर्स ऑफ डेंटिन बनते जा रहा है, इनामेल का भी लेयर बनते जा रहा है एंड यू गेट इनामेल एंड डेंटिन. अब ये बताओ, पल्प के तरफ तो ओडोंटोब्लास्ट होगा, राइट? अमिलोब्लास्ट बाहर की तरफ होगी. सो एज द टूथ इरप्ट्स, अमिलोब्लास्ट will degenerate, disintegrate and will disappear. इसलिए once enamel is formed, it cannot be regenerated. However, pulp forming cells, pulp के अंदर में dentin forming cells हैं. तो dentin की formation जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है. जैसे ये रिपेयर डैमेज होगा तो dentin के डिपोजिशन से रिपेयर हो जाता है. लेकिन इनामेल का अगर डैमेज हो गया, इनामेल अगर डिसइंटीग्रेट कर गई, इनामेल अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उसका रिपेयर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इनामेल की जो कवरिंग इनामेल ऑर्गन होता है, टूथ इरप्ट करने के बाद वो डिजेनरेट करती है. ओरल कैविटी में तो क्राउन आपको टूथ इनामेल पूरा दिखता है, उसके ऊपर तो कोई लेयर होती नहीं है, ये तो एक्सपोज्ड है. और नीचे के डेंटिनो इनामेल जंक्शन से इनामेल बननी चालू हुई थी और ऊपर की तरफ बन के मैच्योर कर गई और इनामेल फॉर्मिंग सेल्स, इनामेल ऑर्गन, अमिलोब्लास्ट, आउटर, ये सारे डिजेनरेट करके वीड आउट हो जाते हैं. तो इसलिए रीजनरेशन ऑफ इनामेल इज नॉट पॉसिबल. रीजनरेशन इनामेल का नहीं हो पाता है, इसलिए उसको कोई मटेरियल सिंथेसाइज करके ही उसको रिपेयर की जाती है. एक और स्कीमेटिक डायग्राम हम आपको बता दें. You can see this is actual histopathology. This is actual histopathology. ये stellate reticulum है.
सॉरी ये dental papilla, odontoblast. This is pre-dentin. These are ameloblasts. These are stratum intermedium. These are stellate reticulum. फिर से देख लो. Pulp cells, odontoblast, pre-dentin, blue color, ameloblast, stratum intermedium and stellate reticulum. न्यूक्लियस देखिए इलोंगेटेड है, बट न्यूक्लियस जो है टुवर्ड्स प्रीपोजिशन एंड के उल्टे साइड में है, और ओडोंटोब्लास्ट के भी न्यूक्लियस जो है उल्टे साइड में है. सो एक्चुअल जब स्लाइड देखते हो तो आपको इस तरह का दिखता है, लेकिन डायग्राम जब बनता है तो इस तरह का डायग्राम बनता है. तो जिस तरह का डायग्राम बनता है वैसा ही आपको स्लाइड में नहीं दिखता. देखो इसमें आउटलाइन आपने बढ़िया से बनाया, न्यूक्लियस गोल बना दिया है, लेकिन जब स्लाइड देखते हो तो यू सी समवट लाइक दिस. तो ऐसे ही स्लाइड आपको क्लास में दिखाए जाएंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ये एक्चुअल स्लाइड डेवलपिंग टूथ जब का है. और लास्ट 2-3 स्लाइड्स है आज के लिए. फिर नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट ओडोंटोजेनेसिस. After the differentiation of odontoblast from outer cells of dental papilla and their formation of pre-dentin, basement membrane between the pre-ameloblast and the odontoblast disintegrate. जैसे मैंने बताया था, this disintegration of basement membrane allows pre-ameloblast to come in contact with newly formed pre-dentin, which induces the pre-ameloblast to differentiate into ameloblast. Ameloblast begin amelogenesis or opposition of enamel matrix, laying it down on their side of now disintegrating basement membrane. The enamel matrix is secreted from Tom's process, a tapered portion of each ameloblast that faces the disintegrating basement membrane. With enamel matrix in contact with pre-dentin mineralization of disintegrating basement membrane occurs, forming dentino-enamel junction, inner junction between dentin and enamel. The odontoblast leave attached cellular extension in the length of pre-dentin called odontoblastic processes. Each odontoblastic process is contained in a mineralized cylinder called dentinal tubule. ये थ्योरी एक बार सुन लो, डायग्राम देखोगे तो अभी दिखाएंगे इसके बाद, तो आपको थ्योरी समझ में आएगी. सो हमने क्या बोला, इन टोम्स प्रोसेस से इनामेल मैट्रिक्स ले डाउन होती है एंड ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस से डेंटिन ले डाउन होती है, और एज डेंटिन इज लेट डाउन उसके चारों तरफ ओडोंटोब्लास्ट के चारों तरफ डेंटिन लेट डाउन होती है, जिससे एक ट्यूब्यूल बनता है जिसे बोलते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल. इस ओडोंटोब्लास्टिक एक प्रोसेस है और वो सीक्रेट करती है मैट्रिक्स ऑफ डेंटिन, और वो मिनरलाइज्ड होता है तो एक ट्यूब बन जाती है, एंड दैट इज नोन एज डेंटिनल ट्यूब. और इसी डेंटिनल ट्यूब्यूल के अंदर ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस कंटेन होते हैं. अब इसको डायग्रामेटिकली आप समझिए. So you can see nucleus are reversed in polarity. Nucleus की polarity reverse हो गई. Enamel matrix is laid down. ये देखिए टॉम्स प्रोसेस है, टॉम्स प्रोसेस से इनामेल मैट्रिक्स ले डाउन हो रही है. इधर से ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस है, ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस बीच में डेंटिन प्रीडेंटिन ले डाउन हो रही है और ये मिनरलाइज होगी और ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस को सराउंड करेंगे तो ये डेंटिनल ट्यूब्यूल बन जाएगा. सो यू कैन सी दिस आर ओडोंटोब्लास्ट अराइजिंग फ्रॉम डेंटल पापाइला, ameloblast arising from enamel organ, ameloblast leading to formation of enamel matrix, and odontoblast leads to formation of predentin or matrix of dentin.
ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस देखिए अवे फ्रॉम द सिक्रेटिंग फ्रंट है, अवे फ्रॉम द सिक्रेटरी फ्रंट है। जो येलो कलर है वो प्रीडेंटिन है और पर्पल कलर का जो है वो इनामल मैट्रिक्स है। The mineralization and calcification of each type of matrix occurs later in different process of enamel and dentin, and this is known as amelogenesis and dentinogenesis. ठीक है? Now ameloblast की डिटेल amelogenesis जब enamel के साथ बताई जाएगी तो उसमें elaborate करेंगे। डेंटिन के साथ ओडोंटोजेनेसिस को elaborate करेंगे। Now comes crown growth and completion. Crown of the teeth increase in size by incremental deposition of enamel matrix. ये crown की साइज बढ़ती है। The first area of crown to completely form cusp teeth and last is cervical region. पहले ही बताया था, पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को कि crown जो है वहां से mineralization स्टार्ट होती है और cervical region पे complete होती है। Crown increases in height or length by differentiation of new ameloblasts. This is followed by deposition of enamel formation at cervical aspect of enamel organ. Crown also increase in size by cell division of inner enamel epithelium by cells by cusp. This results in slight separation of cusp with slight increase in crown size. From the inception of dentinogenesis to completion of amelogenesis, crown size increases in about 4 times. मतलब जब dentin crown और tooth formation स्टार्ट होती है, means pre-dental laydown होती है और पूरा crown complete होता है, उस समय तक size जो है 4 गुना बढ़ जाता है। Again, this is an MCQ question. This is due to cell division in cervical region and deposition of enamel. Thickness cusp tip पे enamel की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहां के ameloblast पहले differentiate करते हैं and they get more time to form enamel. When ameloblast differentiate, they cannot divide. So cusp tip के enamel केवल secrete कर सकते हैं, they cannot divide. और नीचे जो है cervical region से divide करते रहते हैं and intercuspal region and cervical region के जो ameloblast होते हैं, they are last cells to mature. And once यहाँ पे enamel formation हो जाता है, तो enamel completion होता है। तो enamel completion कैसे होता है? Enamel completion is signaled not only by attainment of crown size, but also by mineral content. At the final stage of mineralization, the flattened ameloblast and their basement membrane, along with the remainder of cells of enamel organ, form a membrane on the surface of enamel, which is termed as Naismith membrane or primary enamel cuticle. तो इरप्ट जब enamel करती है, जब tooth इरप्ट करता है, तो उसके ऊपर में एक organic membrane की coating होती है, which is known as Naismith membrane. Naismith membrane is a remnant of enamel organ which is seen on erupted tooth. तो secretory last secretory है, product जो mineralize नहीं होती है उसे Naismith membrane बोलते हैं। Eruption of tooth पे इनके बारे में बताया गया होगा। Now when it comes to root development, the process of root development takes place after crown is completely shaped. The structure responsible for root development is cervical loop, which is most cervical portion of enamel organ. A bilayer rim that consists of inner enamel epithelium and outer enamel epithelium, दोनों मिलके hardwick root sheath बनाते हैं। The root dentin forms when outer cells of dental papilla in root area are induced to undergo differentiation and become odontoblasts. This induction occurs similar to the process that happens in crown area to produce coronal dentin under influence of inner enamel epithelium of hardwick epithelial root sheath. But since, as I said earlier, lacking intermediate layer of stellate reticulum and stratum intermedium, hardwick epithelial root sheath may induce odontoblastic differentiation, but fails to differentiate into enamel-forming ameloblast. This accounts for absence of enamel in root.
So stratum intermedium or stellate reticulum is not there in Hartwig root sheath. So enamel की formation नहीं होती है. There is only formation of dentin in the root portion of the tooth. After the differentiation of odontoblast in root, these cells undergo dentinogenesis and begin to secrete predentin. In crown area, basement membrane is located between inner enamel epithelium sheath and the odontoblast in root area. When the root dentin formation is completed, this portion of basement membrane also disintegrate as Hartwig epithelial root sheath. After disintegration of Hartwig root sheath, they remain in periodontal ligament space as cell rest of molasses. एक cell rest मैंने बताया था, cell rest of Serre, which was remnant of cell rest of dental lamina, which was seen in gingiva. Cell rest of molasses are cell rest of Hartwig epithelial root sheath remnants, and they are seen in periapical region. Periodontal ligament में periapical region में. जैसे cell rest of Serre से odontogenic cyst या ट्यूमर बनते हैं, वैसे ही cell rest of molasses से odontogenic cyst और ट्यूमर बनते हैं. So molasses का spelling भी आप नोट डाउन कर लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे. स्पॉटर्स में या कहीं पे molasses अगर बोलते हो और स्पेलिंग गलत बोलते हो तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा. सेरे का स्पेलिंग सी नहीं होता है, SERRI होता है. तो स्कीमेटिक डायग्राम में स्टेलेट रेटिकुलम, पल्प, आउटर एनामेल एपिथेलियम, सर्वाइकल लूप. नाउ सर्वाइकल लूप की एक्सटेंट इलैबोरेट करके दिखा देते हैं. Inner enamel epithelium, outer enamel epithelium, and this is Hartwig epithelial root sheath. यहाँ पे स्टेलेट रेटिकुलम और स्ट्रैटम इंटरमीडियम की वजह से इनामेल का फॉर्मेशन. यहाँ पे ये दोनों खत्म हो गए तो इनामेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. केवल ओडोंटोब्लास्ट प्रीडेंटिन और डेंटिन बनाती है. तो रूट पोर्शन पे देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन. और जैसे ही हार्टविग रूट से डिजनरेट करती है, उस गैप में cells of dental follicle migrate and comes in contact with radicular dentin, and cells of dental follicle convert into cementoblast and they lay down cementum on root dentin. Same चीज का जो schematic था उसको actual diagram you can see. This is enamel, this is dentin, this is odontoblast, these are ameloblasts. यहाँ पे दोनों मर्ज कर गए, मर्ज करके यहाँ पे हार्टविग रूट शेथ बना. आउटर और इनर एनामेल एपिथेलियम मर्ज करके हार्टविग रूट शेथ बना लगे. Cementum and pulp formation में the opposition of cementum in root area occurs when Hartwig epithelial root sheath disintegrate. This disintegration of sheath allows the undifferentiated cells of dental follicle or dental sac to come in contact with newly formed root dentin. This contact of dental sac cells with the dentin surface induces this immature cells to become cementoblast. The cementoblast move to cover root dentin area and undergo cementogenesis, laying down the cementum matrix or cementoid. Many cementoblasts become entrapped by cementum, reproduce and become cementocytes. As the cementoid tissue surrounding the cementocyte is matured, calcified, it is considered as cementum. As a result of apposition of cementum over dentin, dentinocemental junction is formed. Also, at this time, central cells of dental papilla form dental pulp. ठीक है? ये comparative chart है. जैसे enamel की origin जो है epithelial है, dental papilla connective tissue, dental follicle connective tissue, and alveolar bone connective tissue. Formative cells of enamel, ameloblast,
dentin odontoblast, cementum cementoblast, and alveolar bone osteoblast. Incremental lines is seen in case of dentin and enamel. cementum में भी मिलता है लेकिन alveolar bone में prominent नहीं होता है. enamel formation के बाद ये degenerate कर जाते हैं. dentin formation के बाद भी odontoblast रह जाते हैं. cementocytes trapped रहते हैं cementum में. osteocytes भी bone formation के बाद trapped रहते हैं. enamel की resorption ओडोंटोब्लास्ट से हो सकती है. डेंटिन की भी रिजॉर्प्शन ओडोंटोक्लास्ट से होती है. सीमेंटम भी ओडोंटोक्लास्ट से रिजॉर्व होता है. एल्वुलर बोन भी ओडोंटोक्लास्ट से रिजॉर्व हो सकता है. सबसे ज्यादा मिनरल कंटेंट एनामेल में 96, डेंटिन उसके बाद, फिर सीमेंटम, फिर एल्वुलर बोन. सबसे कम मिनरल कंटेंट एल्वुलर बोन में होता है. ठीक है. टिश्यू फॉर्मेशन आफ्टर इरप्शन, केवल इनामेल में इरप्शन के बाद टूथ फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके बाद संभव होता है. वास्कुलैरिटी की जहां तक बात होती है, there is no vascularity in enamel and dentin and cementum, whereas alveolar bone में vascularity होती है. इनर्वेशन, enamel में कोई इनर्वेशन नहीं होता, cementum में कोई इनर्वेशन नहीं होता, लेकिन dentin और alveolar bone में इनर्वेशन होता है. This all are MCQ questions. तो इनर्वेशन किस दो हार्ट टिश्यूज में मिलते हैं? dentin and alveolar bone. वास्कुलैरिटी किसमें मिलता है? केवल alveolar bone में. टिश्यू फॉर्मेशन आफ्टर इरप्शन किस में नहीं होता है? केवल एनामेल में. सबसे ज्यादा मिनरल कंटेंट किस में होता है? एनामेल में. ठीक है. इंक्रीमेंटल लाइन रेडियस एनामेल में मिलता है. बोन एबनर जो है वो डेंटिन में मिलता है, और सीमेंटम में अरेस्ट लाइन और रिवर्सल लाइन मिलते हैं. जो क्रिस्टल होते हैं, तीनों में हाइड्रोक्सीअपेटाइट क्रिस्टल होते हैं. रीजनरेशन एनामेल की पॉसिबल नहीं है. डेंटिन ओडोंटोब्लास्ट से, सीमेंटम सीमेंटोब्लास्ट से, और बोन ऑस्टियोब्लास्ट से रिजॉर्प्शन संभव है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास we'll try to further elaborate and molecular aspect के बारे में कुछ होगा तो बता देंगे. ठीक है. सो विशाखा अटेंडेंस दे देना बेटा. यस सर. ठीक है. थैंक यू.